Okay, so hello students, I hope all of you are doing perfectly well. So basically आज की क्लास जो है इस क्लास में हम लोग कोलिशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ कोलिशन से. So एक एक करके हम लोग वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे. So I hope all of you can see the screen properly and the sound is also clear. So let's just initiate. देखो सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने ऑलरेडी स्क्रीन पे है. एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और इसका सोल्यूशन कीजिए. क्या बोला गया है सवाल में पूछा गया है कि क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है. एक बार जरा देख लो इस क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करते हैं. सवाल में बोला गया है कि a block of mass 2 kg is moving on a frictionless horizontal surface with a velocity of 1 meter per second towards another block of equal mass kept at rest. Very good. The spring constant of the spring fixed at one end is 100 Newton per meter. The maximum compression in the spring is equals to what? स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया. और क्वेश्चन, अच्छा इस ब्लॉक का मास पता है 2 kg है, इस ब्लॉक का मास भी 2 kg है, दोनों के मास भी 2 kg है. ये फ्लोर जो है ये फ्रिक्शनलेस है. इस ब्लॉक का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड. ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था और आने के बाद जब टकराए उसके बाद क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया है और बोला गया है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर. ओके, सो देयर इज वन थिंग. एक तो हम लोग कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. सो यू कैन ऑलवेज अप्लाई द कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड ऑफ कोर्स इलास्टिक कोलिशन है तो डेफिनेटली हम लोग काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्वेशन भी लगा सकते हैं. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक चीज लिखना चाहते हैं, वो ये है कि आफ्टर द कोलिजन after the collision its velocity decreases continuously. Its velocity decreases continuously and at the instant the whole system and at an instant the whole system that means the block, the spring and this block also move together with a common velocity. Move together with a common velocity. Velocity say v. So let's just apply all these things over here. It's kind of an easy thing. So first of all, conservation of energy, conservation of momentum, I can put that ma into va plus mb into vb, initial velocity of this and this, equals to ma plus mb into v. That's the final common velocity of both the masses. अब तुम लोगों को पता है कि v भी 0 है क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे था. v तुम्हारा 1 है और इसका मास है 2 kg, तो 2 into 1 इक्वल्स टू, इन दोनों का मास ऐड कर दो 4 into v. तो 2 into 1 plus 2 into 0 equals to 2 plus 2 into v. तो यहां से कुछ आ रहा है, यहां से v का वैल्यू आ रहा है हाफ. That implies v is equal to half. v का वैल्यू है हाफ मीटर पर सेकंड. ठीक है, v तुम्हारा हाफ आ रहा है कि बोथ सिस्टम हाफ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव करेंगे.
नाउ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हो यहाँ पे। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, आई मीन कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी अगर मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगाए तो इसका इनिशियली था हाफ हाफ एम ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी बी स्क्वायर should be equals to half to ma plus mb into v square. ma plus mb, both the mass move with a common velocity, ma plus mb into v square plus this energy of the spring, क्योंकि वो compress हो रहा है तो half kx square. That's all I can write. Now everything you know, right? Over here, you know everything. So putting all the values, you can get the answer. तुम्हें va पता है 1 है तो 1 square equals to 1, तो 2 cancel 1, तो here I'm getting half into 2 into 1 square plus half into 2 into 0 square is equal to half into 2 plus 2 into half का square plus half into 100 into x square. So यहां से तुम लोग निकाल सकते हो, see this one is 0, this one is actually 2 to cancel तो 1 आ रहा है, 1 plus 0 equals to यहां से आ रहा है 4, 4 by 2 equals to 2, तो 2 by 4 is equals to half प्लस यहां से तुम्हारा आ रहा है 50x स्क्वायर। तो एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ तो 1 minus half equals to half, so x square is equals to 1 by 100, तो x क्या हो जाएगा 1 by 10, 1 by 10 मीटर मतलब 0.1 मीटर, 1 by 10 मीटर मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 by 100 और simply x equal to 0.1 meter, that is 10 centimeter. The maximum compression in the spring is equals to 10 centimeter. और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया by simply applying the conservation of linear momentum and the conservation of energy. काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। फाइनल वेलोसिटी तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, इस मास का फाइनल वेलोसिटी अगर चाहिए था, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है v2 minus v1 by u1 minus u2, यही होता है ना। इनिशियली ये वाला 0 पे था तो ये 0 हो गया, तो ये तुम्हारा u1 है नीचे, तो जस्ट बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है तो आई कैन टेक इट एज 1, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1, u1 is equals to, so this thing is actually equals to u1। अब फाइनल वेलोसिटी दोनों का देखो, दोनों अगर ऐसा कर सकते हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, they move with a common velocity v, so from here I can find out the value of v2 as well। So I know that both of them move with the same velocity। What was u? 1 half minus half, so I can write half, but both of them should have the velocity in the opposite direction, in that case only this happens, क्योंकि इसका वेलोसिटी इस तरफ होना चाहिए, इसका वेलोसिटी इस तरफ होना चाहिए, तब ना जाके दोनों वो करेंगे। आफ्टर कोलिजन its velocity decreases continuously at an instant, and when the whole system moves together with a common velocity v, the whole system moves together with a common velocity v, so from there coefficient of restitution से भी तुम निकाल सकते हो कि half minus minus half is actually equal to 1, so from there also you can find this out। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार मुझे बता दो कि ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया है या नहीं। इफ यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आसान था, दिस क्वेश्चन वाज इजी। लेट्स ट्राई दिस वन। क्या बोला गया इस सवाल में? A bullet of mass 20 gram traveling horizontally with a speed of 500 meter per second passes through a wooden block of mass 10 kg
initially at rest on the level surface. The bullet emerges with a speed of 100 meter per second and the block slides 20 centimeter on the surface before coming to rest. Find the frictional coefficient. Find the frictional coefficient. ये पूछा गया है. फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या होगा ये पूछा गया है. ठीक है, तो ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है ये निकाल सकते हैं हम लोग. ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है. बुलेट का मास स्मॉल m है, बुलेट का वेलोसिटी u1 प्लस ब्लॉक का मास कैपिटल M, ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी u2 शुड बी इक्वल्स टू, जस्ट बिकॉज इन लोगों ने कोलिजन करा तो कोलिजन के बाद द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस. ओके, द बुलेट emerges with a speed of 100 मीटर पर सेकंड. तो बुलेट का मास स्मॉल m, उसका फाइनल वेलोसिटी v1, ब्लॉक का मास कैपिटल M, ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी v2. तो therefore you can say बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम है ना. u2 तुम्हारा 0 है क्योंकि ब्लॉक का इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, तो u2 0 है. u2 इक्वल टू 0, तो स्मॉल m इंटू u1. स्मॉल m कितना है तुम्हारा 20 ग्राम, मतलब 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई u1 कितना है 500 मीटर. 500 मीटर प्लस 0 इज एक्चुअली इक्वल टू 0.2 इंटू 100 प्लस ब्लॉक का मास है 10 kg, 10 इंटू v2, और इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारे पास 0.2 मतलब 2 by 10, राइट. सो दिस इज 100 और यहां से क्या आ रहा है 2 by 10, दिस इज 20. 100 plus 20 equals to 80. 80 by 10, so v2 equals to 8. ठीक है. अच्छा ये 0.02 होगा ना. ये 0.02 होगा केजी में लोगे तो 0.02 केजी होगा. 20 ग्राम मतलब 0.02 केजी. तो उस हिसाब से 10 माइनस 8 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8, तो 8 by 10 0.8, so v2 इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकंड. ये तुम्हारा v2 आ रहा है. अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस. तो बेसिकली ये वेलोसिटी से मूव करना चाह रहा है बट फ्रिक्शन इसे रोक रहा है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द फ्रिक्शन विल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. Now after collision, capital M will move with velocity v2 equal to 0.8. Friction will resist this motion and eventually the block will come to rest, and eventually capital M will come to rest. So change in kinetic energy is work done by friction. So delta K equals to work done by friction. What is the change in kinetic energy, brother? Sir, very easy. Initial kinetic energy was half m v2 square, final kinetic energy will be 0.
So 0 minus half capital M into V2 square should be equals to, friction always acts opposite to the direction of motion. So negative of mu into n into the displacement. Negative of mu into n into the displacement x, suppose. What is the normal reaction? That is 10 into 10 is 100, I guess. Yeah. So now it's easy. Half into 10 into 0.8 square is equal to the frictional coefficient of friction with the block. Achha, the x is 20 centimeter. Okay. The coefficient of friction is suppose mu into normal reaction is equals to 10 into 10 multiplied by the x is equals to 20 centimeter, that is 0.2. Easy. So here I'm getting 20 mu, and over here 0.8 square multiplied by 10.5, 3.2. So 3.2 divided by 20, 0.16. So from here mu equal to 0.16. From here I can write mu equal to 0.16. This is an easy question. ये वाला क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल टफ नहीं था. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, अगर कोई दिक्कतें हैं तो मुझसे पूछ लो. आफ्टर दैट कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चंस छोड़ते हैं थोड़ी देर, पहले इसको देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है. ओके, स्प्रिंग और मास वाले क्वेश्चंस को थोड़ा अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले. जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि two masses m1 and m2 are connected by a spring of spring constant k and are placed on a frictionless horizontal surface. Initially, the spring is stretched by a distance x naught when the system is released from rest. Find the distance moved by two masses before they again come to rest. अच्छा, तो ऐसा था, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक स्प्रिंग जिसके बीच में कंप्रेशन दे रखे हो, और यहाँ पे अब तुमने पकड़ के रखा है इन दोनों मासेस को. जब छोड़ते हो ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा. So I have asked what is the distance moved by this mass and this mass before they come to rest again. Before they come to rest again. Before they come to rest. Okay, two masses m1 and m2 are connected by a spring of spring constant k. Okay, and are placed on a frictionless horizontal surface. Two masses m1 and m2 are connected by a spring and okay, fine. ठीक है. देख, स्प्रिंग के अंदर एक इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है जो पोटेंशियली फाइनली इन दोनों मास में वो देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा. दैट थिंग आई एम श्योर. अच्छा, कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास शुड बी एट रेस्ट, है ना.
दैट्स ऑल आई कैन फील. सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे रहे तो I can use the formula m1 x1 plus m2 क्योंकि position of the center of mass is unchanged by this displacement. Good. Initially there was a compression and we can hope that that compression is still there. Fine. So what is the net compression now, or compression or elongation now in the spring that we can think of? Maybe चलो ठीक है शुरू करते हैं. Suppose I need a figure for this. क्वेश्चन एक फिगर हो तो अटैच कराने में आसानी होगी. लेट यहाँ पे ये सीन है, ये एक मास है, यहाँ पे स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड कंडीशन में है, ये दूसरा मास है. उसके बाद जब तुमने छोड़ा है ये मास थोड़ा इस तरफ आ गया है ऐसा, ये तुम्हारा अभी स्प्रिंग है, ये मास थोड़ा इस तरफ आ गया है. से दिस डिस्टेंस इज योर x2, दिस डिस्टेंस इज योर x1 एंड ये तुम्हारा मास m1 है, ये तुम्हारा मास m2 है. दिस इज अगेन m2, दिस इज m1. गुड. m2 फाइन. इनिशियली कॉम्प्रेशन x0 था, अभी कॉम्प्रेशन कितना है वो मुझे देखना है. इधर x1 है, इधर x2 है, तो x1 प्लस x2 माइनस x0 होना चाहिए. Let the distance traveled by m1 let the distance traveled by m1 towards left is x1 and that traveled by m2 is x2 towards right. m2 राइट में मूव कर रहा है. Let the distance traveled by m1
So what can I say now? ठीक है, तो ये one into connected by a spring or spring constant किया and placed on a frictionless horizontal surface initially. Okay, ठीक है, तो since there is no external force on the horizontal direction, since there is no external force on the horizontal direction, therefore m1 x1 should be equal to m2 x2. That's one thing I know. अच्छा, मैं अगर इनिशियल और फाइनल सिचुएशन की बात करूं तो फाइनली वो ब्लॉक्स रेस्ट पे आ रहे हैं। इनिशियली भी दो ब्लॉक रेस्ट पे थे, तो सिंपली हम लोग स्प्रिंग के एनर्जी को इक्वेट करा सकते हैं। अगेन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ द स्प्रिंग, again as energy is conserved in the spring, तो तुम एक काम कर सकते हो कि सर पहला जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कॉन्जर्व था, इट वाज हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर, ये कॉम्प्रेशन था। अभी ये मास इधर मूव करा है x1, ये इधर मूव करा x2, तो ये इलोंगेशन है, कॉम्प्रेशन x नॉट है, तो हाफ m x1 प्लस x2 माइनस x नॉट का स्क्वायर आना चाहिए। हाफ एम काट दो, बोथ साइड रूट कर दो, तो यहां से तुम 2x नॉट इक्वल्स टू x1 प्लस x2 मिल रहा है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज योर x नॉट, और x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2x नॉट, ये हम लोग लिख सकते हैं। यहां से मैं लिख सकता हूं x1 2x नॉट minus x2. Now suppose this is your equation number 1, this is your equation number 2. I have two variables x1 x2 and I have two equations. So putting this value of x1 from here to here, you can get the value of x2. Solving 1 and 2, we get solving 1 and 2, we get x1 का एक वैल्यू मिलेगा, x2 का एक वैल्यू मिलेगा। x1 और x2 का वैल्यू क्या है? देखो, इसको अगर उठा के यहां पे प्लेस करोगे तो m1 x1, तो 2m1 x0 माइनस m1 x2 should be equal to m2 x2, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो 2m1 x0 by m1 plus m2, 2m1 x0 2m1 x0 by m1 plus m2, 2m1 x0 by m1 plus m2, x2 का वैल्यू ये है, और यही वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? m2 by m1 to 2m1 x0 by m1 plus m2, m1 cancel, 2m2 x0 2m2 x0 divided by m1 plus m2,
ये x1 है, x2 होगा 2m1 x0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दैट्स ऑल आई कैन राइट। ये फिगर अच्छा नहीं है, ये फिगर मैं बाद में ड्रॉ करके इस पे ऐड करा दूंगा फिलहाल के लिए, और फिगर जरूरत नहीं है, तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। सो दैट इज इट, ये चीज यहाँ पे है। 2m1 x0 divided by m1 plus m2, 2m2 x0 divided by m1 plus m2। So these are the facts। इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले अच्छे से पढ़ो। बोला गया है टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, दो ब्लॉक है जिनका मास है m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। द ब्लॉक ऑफ मास m2 इज गिवन अ शार्प इंपल्स सो दैट इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी v0। गुड। Find the velocity of the center of mass and the maximum elongation that the spring will suffer। पूछा गया है velocity of the center of mass क्या है और spring का maximum elongation क्या हो। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दोनों मास का वेलोसिटी हम लोग अगर काउंट करें एकदम इनिशियल टाइम पे, जब तुमने इसको एक वेलोसिटी दिया तो इसका वेलोसिटी था v0, बट इसका कोई वेलोसिटी नहीं था, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तुम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो m1 इंटू 0, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू v0 divided by m1 plus m2। So that is m2 v0 by m1 plus m2। That is the velocity of the center of mass। फिर क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। स्प्रिंग कितना इलोंगेशन सफर करेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट विल बी सफर्ड बाय द स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा जब ये दोनों के दोनों मास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अटेन करेंगे, समझ रहे हो। थोड़ा सा इसको सोचो और सोच के मुझे बताओ। थोड़ा सा सोचो और सोच के मुझे बताओ। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तुम लोग को पता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ब्लॉक का जो तुम्हारा मतलब स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा जब तुम्हारे दोनों के दोनों जो ब्लॉक है वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अटेन करेंगे। स्प्रिंग विल have the maximum elongation when velocities of both the blocks becomes equal to the velocity of the center of mass of the two blocks। मैं यहाँ पे ये चीज लिखना चाहता हूँ, the spring will have maximum elongation, the spring will have maximum elongation when the spring will have maximum elongation when velocity of both the blocks when velocities of both the blocks becomes equal to velocity of the center of mass। When velocities of both the blocks become equal to velocity of
center of mass. Fine. So initially there was the velocity of only this one, and there was no compression in the spring. So initially it was just like half m to v naught square. Therefore, half m1 into 0 square plus half m2 into v naught square is actually equals to half m1 plus m2 into velocity of center of mass square plus the maximum elongation in this spring is equals to half kx square. We know this. If you do velocity of center of mass square, you're gonna get m2 v naught by m1 plus m2 whole square. So things will be easy that way. You're gonna get half m2 v naught square, half यहाँ से यहाँ पे इसको वो कर तो नीचे m1 plus m2 आ जाएगा, यहाँ पे m2 square v naught square plus half kx square. Done. So all you can do is that you can just cancel this half terms, just cancel this half terms, and now I just need to find the value of what? X, right? I need to find the value of x. So we can do one thing, just bring it on this side and just have a look what you're getting. So m2 v naught square minus m2 square v naught square divided by m1 plus m2. हाँ ठीक है. So from here you are getting the value of x2 as, ठीक है, यहाँ से x2 को directly लिख सकते हैं. That implies x is actually equals to m1 m2 divided by m1 plus m2 to the power of half into v naught. That I can say. That I can say. So that's your x. m1 m2 divided by m1 plus m2 to v naught, and there will be a k as well. k भी यहाँ पे रहेगा, k यहाँ पे k भी रहेगा. इसको कैसे लिखूं? चल ठीक है, पूरा ही निकालना पड़ेगा. m1 m2 divided by k into m1 plus m2 root over into v naught. That's the answer. ठीक है. चलो, ये वाला क्वेश्चन अगर हो गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां बोला गया है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम. सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F instead of any impulse. Find the maximum elongation that the spring will suffer and the distances moved by the two blocks in this process. ठीक है. अभी मैंने क्या किया है कि ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनको मैं कांस्टेंट फोर्स F से खींच रहा हूं, so impulse नहीं दे रहा हूं. तो find the maximum elongation that the spring will suffer and the distances moved by the two blocks in this process. अच्छा, इस केस में क्या था? इस प्रॉब्लम को हम लोग म्यू बाई के से भी कर सकते थे. चलो कोई नहीं, जैसा भी है हो गया. बोला गया कंसीडर द सिचुएशन ऑफ the previous problem. Consider the situation of the previous problem. Suppose each of the block is pulled by a constant force F instead of any impulse. Okay. Find the maximum elongation that the spring will suffer
एंड द डिस्टेंस, ओके फाइन। तो ये जो दो ब्लॉक है ना, इसको मैं रिड्यूस्ड मास से कर सकता हूँ क्या रे? ये जो दो ब्लॉक है इस सिस्टम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके साथ एक स्प्रिंग के साथ ये एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं f1 f2, अच्छा f लग रहे हैं, ये यहाँ पे मैं 2f फोर्स दे रहा हूँ इनके ऊपर। मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर, मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर, हाँ ठीक है। तो जितना इलोंगेशन होगा f इक्वल्स टू kx होता है ना, f इक्वल्स टू kx, तो आई कैन जस्ट से दैट 2f इक्वल्स टू k इंटू x, ये होना चाहिए। What they have seen, the distance moved by the two blocks. Okay. ये दोनों ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? नहीं, हम हमें ये पता है कि both the blocks move the same, like the total distance moved by the two blocks is basically 2f by k. I mean x1 plus x2 अगर मैं देखूं, that is will be my 2f by k, that I can write 2f by k। अब ये सिनेरियो है कि कितना डिस्टेंस ये दोनों मूव कर रहे हैं। हम्म, चलो ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से देखते हैं। दो तरफ दोनों फोर्स लगाए हैं है ना, so I can write that if both the blocks are pulled by some force, if both the blocks are pulled by some force, by some force, are pulled by some force F, then suddenly they will move with some acceleration, then suddenly they will move with some acceleration, suddenly they will move with some acceleration and instantaneously stop, and instantaneously stop at some position where the elongation of the spring is maximum, where the elongation of the spring is maximum. We know this. This will happen. ठीक है. Let x1, x2 be the extension of block m1 and m2. x1 and x2 be the extension, you can write, or displacement of blocks m1 and m2. तो अगर सिचुएशन ऐसा है, therefore वर्क डन कैसे लिख सकते हो? टोटल वर्क डन क्या होगा भाई? f x1 प्लस f x2, दोनों के ऊपर सेम फोर्स काम कर रहा है। इस ब्लॉक के ऊपर f इस तरफ, इस ब्लॉक के ऊपर f इस तरफ, तो ये इस तरफ x1 मूव करेगा, इस तरफ x2 मूव करेगा, तो f x1 प्लस f x2
that should be the increase in potential energy of the spring. That should be equals to increase in potential energy of the spring and what this will equal to. I can very well write it as half k x1 plus x2 ka square. I know this. So x1 plus x2 is equals to 2f by k. That is one equation which I have got. x1 plus x2 is equals to 2f by k. Now, since the net force on the system in the horizontal direction is 0, therefore, what can I write? m1 x1 should be equal to m2 x2, right? And x1 plus x2 is 2f by k. So from these two equations, this is equation number 1. This is my equation number 2. Now if from here I'm getting x1 is m2 m1 by m2 by m1 into x2, m2 x2 by m1. So m2 x2 by m1 plus x2 equal to 2f by k. And from here you can get the value of x2 as 2f by k m1 divided by m2 plus 1. 2f by k m1 divided by x1 is equal to 2f by k m1 divided by m2 plus 1. m1 plus done. यहाँ पे x1 का वैल्यू क्लियर होना चाहिए, देख लो x1 क्या है m2 by m1 into x2 plus x2 should be 2f by k plus x2 should be equal to 2f by k. तो यहां से x2 का वैल्यू क्या आ रहा है? If I take common x2, I will get m2 by m1 plus 1 equals to 2f by k. So यहाँ पे m1 divided by m1 plus m2 into 2f by k मिल जाएगा मुझे x2 का वैल्यू, m1 divided by m1 plus m2 into 2f by k. तो सॉल्विंग 1 and 2 अब डायरेक्टली लिख दो, अब लिखने की जरूरत नहीं ज्यादा. Solving 1 and 2, we get x1 is equals to m2 divided by m1 plus m2 into 2f by k, and x2 is equal to m1 divided by m1 plus m2 into 2f divided by k. 2f divided by k. That's the answer. ये वाला क्वेश्चन भी आसान था और अच्छा क्वेश्चन था. ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था. इसके बाद there is another question. Consider the situation of the previous problem. Suppose the block of mass m1 is pulled by a constant force f1 and the other block is pulled by a constant force f2. Find maximum elevation of the spring. Okay, this is the same question actually.
ये इन लोगों ने एक क्वेश्चन 2 बार डाल दिया क्या? ओके, यहाँ पे अलग अलग फोर्स है, यहाँ पे सेम फोर्स नहीं है, यहाँ पे अलग अलग फोर्स है। द फोर्सेस आर नॉट डिफरेंट। द फोर्सेस आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब फोर्सेस डिफरेंट है। हम लोग मास्टर क्लास में ये क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे ही रखता हूँ। व्हेन द फोर्सेस आर डिफरेंट वी विल सी दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास और मे बी इन द मास्टर क्लास। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। जो भी बच्चे फिलहाल CSIR दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए मैं बता दूं कि आप सबको पता ही है कि छठ पूजा चल रहा है। तो छठ पूजा के ये जो उत्सव है इसमें टेक्स्ट बुक ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है स्टूडेंट को, जो बेसिकली तो कोर्स का प्राइस है उसको बहुत ही ज्यादा रिड्यूस करा गया है। आप लोग देख सकते हो 15,999 इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कोर्स, जो रिड्यूस करके 4,799 करा गया है। तो जो भी बच्चे दिसंबर इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो दे आर वेरी मच वेलकम टू ज्वाइन दिस कोर्स, दिस बूस्टर कोर्स, जहाँ पे सारे के सारे जो आपके डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेंगे विद PDF। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग लाइव क्लासेस में बहुत सारे MCQ सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड वी आर डूइंग सम न्यू क्वेश्चंस एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट्स, लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है अगर तुम CSIR एग्जाम देने जा रहे हो तो, क्योंकि मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस के बिना एग्जाम देना बेकार है, because you don't know how to manage time, you don't know how to manage pressure, so everything you will get to learn by giving mock test, as many mock tests as you can. And apart from that, some PYQ books and the PhD mentorship program is also there. So कैसे कोर्स को एनरोल करना है मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। All you have to do is just to go to the Google Chrome and write down CSIR NET Supercoaching। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, just give me a moment। I hope all of you can see the screen now। देखो स्क्रीन पे जाना, गूगल क्रोम पे जाके लिखना CSIR नेट सुपर कोचिंग सर्च बार पे, तो जो पहला वाला हाइपरलिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे, करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, देखना यहाँ पे आपको दिखेगा फिजिकल साइंस बूस्टर कोर्स दिसंबर 2024, इस पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आने के बाद यू विल गेट टू सी यहाँ पे एक बाय नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे अपना फोन नंबर यहाँ पे देने का जगह आएगा, यहाँ पे अपना फोन नंबर दे पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वहां पे आएगा प्रोसीड टू पेमेंट, उस पे क्लिक करना। देखना आएगा प्रोमो कोड, डोंट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड बिकॉज वंस यू यूज प्रोमो कोड यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आप लोग सबको प्रोमो कोड पता ही है, दैट इज SOURAV विच इज माय नेम। यही प्रोमो कोड आप लोग वहां पे डाल दोगे तो जो भी एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर डिस्काउंट लग के आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम लोग और भी बहुत सारे कोलिशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, बट फिलहाल ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग मास्टर क्लास में सॉल्व करेंगे जो 11 बजे होने वाला है। तो सीइंग यू ऑल एट मास्टर क्लास, थैंक यू वेरी मच।